السلام علیکم عزیز طلباء، لیکچر نمبر 27 لے کر ڈاکٹر محمد تجمل چغتائی حاضر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم تھیوننس تھیورم کی ہی مزید پریکٹس کریں گے، اور ان سرکٹس میں جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر کو کلوز کیا تھا، اس کی کنٹینیویشن کے طور پر مختلف قسم کے ڈپینڈنٹ کرنٹ یا وولٹیج سورسز کا استعمال کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ ایسے سرکٹس کو کس طرح سے انالائز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم ایک نیا ٹاپک جو کہ نارٹنس تھیورم کے نام سے جانا جاتا ہے وہ بھی سیکھیں گے۔ نارٹنس تھیورم جب ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی سرکٹ انالائز کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بالکل تھیوننس تھیورم جیسا ہے، صرف اس میں فرق یہ ہے کہ تھیوننس تھیورم میں ہم تھیونن وولٹیج نکالتے تھے، جبکہ نارٹنس تھیورم میں ہم نارٹنس کرنٹ نکالیں گے۔ اسی طرح سے تھیوننس تھیورم میں ہم تھیوننس ریزسٹنس نکال کر اس کو تھیونن وولٹیج کے سیریز میں لگا دیتے تھے اور پھر لوڈ ریزسٹنس کو انسرٹ کرتے تھے، جبکہ نارٹنس تھیورم میں ہم آئی نارٹن کو نکالنے کے بعد اس کو ایک کرنٹ سورس سے ریپلیس کر دیں گے اور نارٹنس ریزسٹنس کو اس کے ساتھ پیرالل میں انسرٹ کر دیں گے، اور پھر جو بھی پیرامیٹرز ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہوں گے ان کو دیکھیں گے۔ نارٹنس تھیورم سے متعلق مزید ایکسپلینیشن اور انڈرسٹینڈنگ جب ہم اس تھیورم پہ پہنچیں گے اس وقت دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے تھیوننس تھیورم کی ہی مزید مثالیں دیکھتے ہیں جن میں ڈپینڈنٹ سورسز کا استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو مثال ہم لینے جا رہے ہیں اس میں وولٹیج ڈپینڈنٹ وولٹیج سورس کا استعمال کیا گیا ہے، اور سرکٹ ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ایگزامپلس تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ آئیے اس کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ In this circuit, we want to calculate the current I0 through the 2 kilo ohm resistance. Now, because we are asked to calculate the current I0, therefore, we can assume that 2 kilo ohm resistance is our load resistance. Also from the circuit we can see that a voltage dependent voltage source has been used which is having a value of 2V sub x. Now the value of this voltage dependent voltage source is relying upon the voltage drop across 4 kilo ohm resistance. There is another voltage independent source having a value of 12 volts used in this circuit. Now, applying Thevenin theorem, we have to follow all the same 4 steps. As a matter of first step, we replace the RL so that we are able to calculate the Thevenin voltage. After replacing the load resistance from the circuit, the leftover circuit will be as shown in this slide. Now from this circuit we can clearly see that we are left with 2 loops. Therefore, we can calculate the VTH step by step. That is, first of all, we will calculate the voltage at the node A, and then we will calculate the voltage at the node B. And because our Thevenin voltage is the voltage drop at the points A and B, therefore, when we will be calculating, we will consider the 2 voltages on these nodes. Now, also we can see from the circuit that the voltage at the node A is equal to the voltage across the 4 kilo ohm resistance, which is marked as V sub x. Therefore,
we can write Vx is equal to 4 into 12 divided by 4 plus 8, because we can see for the node A, the network for this loop is nothing more than a voltage divider network. Hence, applying voltage division rule, we have written this expression. Further simplifying it, we can write Vx is equal to 4 volts. And as we have told you earlier on that Vx will be equal to Va, therefore we write 4 volts equals to Va. Now, similarly, we need to calculate the voltage at the node B. And once again, we can see that there exists a voltage divider network for this loop as well. And we can well calculate the value of the voltage dependent voltage source, because we have already calculated the value of Vx. Therefore, we can write the voltage at the node B as V sub B is equal to 8 into 4 divided by 16, that will be equal to 2 volts. Therefore, VAB, which will be equal to V Thevenin, will be equals 4 minus 2, as we are interested in the difference between the two node voltages. Therefore, we have written 4 minus 2, that will be equal to 2 volts, and same value will be assigned to the Thevenin voltage. अब जबकि हमने थेवेनिन वोल्टेज को कैलकुलेट कर लिया है, तो हमारा अगला स्टेप थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने से मुतालिक है. इस केस में क्योंकि हमने सर्किट में देख सकते हैं कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा हम, जैसा कि हम पहले करते आए हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज के केस में, कि कुछ सोर्सेज को हम शॉर्ट सर्किट कर देते थे और कुछ सोर्सेज को ओपन सर्किट कर देते थे, लेकिन इसमें जबकि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज का इस्तेमाल हुआ हो, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, बल्कि हमें जो हमने लोड रेजिस्टेंस रिप्लेस किया है वहां पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट करना है, और उसके बाद हम करंट को कैलकुलेट करते हुए, और करंट को कैलकुलेट करने के बाद VTH की मदद से हम थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे. आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं. नाउ वी हैव replaced the open circuit with the short circuit and assigned the current flowing through this wire as I short circuit. Also, in the circuit, we have shown for the convenience various currents flowing in the various branches of the circuit. Through 8 kilo ohm resistance value, we suppose that current I1 is passing through. Through 4 kilo ohm value resistance, the current passing is I2. ISC is the current which is passing through the short circuit wire. I4 is the current passing through the 4 kilo ohm resistance which is on the other side of the circuit, whereas I5 has been assigned to the resistance having a value of 12 kilo ohms. Now, to find the short circuit current, we proceed with node number 1, and we can write the equation as V1 minus 12 divided by 8K plus V1 divided by 4K plus V1 divided by 4K
plus V1 minus 2Vx divided by 12K is equal to 0. Also, we can see from the circuit that Vx is equal to V1. Therefore, putting the value of Vx into this equation, we can write V1 minus 12 divided by 8K plus V1 divided by 4K plus V1 divided by 4K plus V1 minus 2V1 divided by 12K equals 0. Simplifying this, we can write 3V1 minus 36 plus 6V1 plus 6V1 plus 2V1 minus 4V1 is equal to 0. Now, from this equation, we can see that we are left with only one unknown variable. Therefore, we can simplify it and work out the value of V1 using simple mathematics. Hence, we can write V1 is equal to 36 divided by 13. Also, we can write the expression for I1 so that we can write I1 is equal to 12 minus V1 divided by 8K. Putting up the value of V1, we can write 12 minus 36 divided by 13 whole divided by 8K. That will be equal to 15 divided by 13 milliamperes, or I1 is equal to 1.15 milliamperes. Similarly, we can calculate the value of I2. Therefore, we can write I2 is equal to 36 divided by 13 whole divided by 4K. That will be equal to 9 divided by 13, and this will come up as I2 is equal to 0.692 milliamperes. Similarly, I4 can be written as equal to 36 divided by 13 whole divided by 4K. That will be equal to 9 divided by 13 milliamps, and that is also having a value same as I2 equals to 0.692 milliamperes. And finally, the value of I5 can be calculated as equal to 36 divided by 13 minus 2 into 36 divided by 13 whole divided by 12K. That will be equal to minus 3 divided by 13 milliamperes. Hence, I5 is equal to minus 0.23 milliamperes. Now, we can write I3 is equal to, and because from the circuit we can see that the short circuit current is the same as I3, hence we can write I3 is equal to ISC. That will be equal to I4 plus I5, because I4 and I5 are leaving the node, whereas I3 is approaching the node. Therefore, putting the values of I4 and I5, we can calculate the value of I3 equals 0.692 minus 0.23. That will be equal to 0.46 milliamperes. Therefore, applying Ohm's law, we can safely calculate the Thevenin resistance, because we know the value of short circuit current. Also, we know the value of Thevenin voltage. Therefore, we can write R Thevenin is equal to V Thevenin divided by I short circuit. That will be equal to, after putting up the values, R Thevenin equals 2 divided by 0.46 milli,
this milli, when it goes up, it will be converted into the kilo. Therefore, R Thevenin will be equal to 4.33 किलो ohms. अब जबकि हमने R Thevenin और V Thevenin को कैलकुलेट कर लिया है, लिहाजा हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि I नॉट को कैलकुलेट कर सकें. पिछली मिसालों में हम V नॉट को कैलकुलेट करते आए हैं, जबकि इस मिसाल में हम I नॉट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं. मामला वही है, सिर्फ हमने ओम्स लॉ को थोड़ा सा रीअरेंज करते हुए I नॉट को कैलकुलेट करना है. आइए I नॉट को कैलकुलेट करने के लिए स्लाइड पर चलते हैं. Therefore, we can write I naught is equal to 2 divided by 2k plus 4.33k, because you can see from the circuit that the circuit which is Thevenin equivalent circuit is nothing more than a voltage divider circuit. Hence, I naught is equal to 0.315 milliamperes. अजीज तलबा, अगली मिसाल में एक करंट सोर्स जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है उसका इस्तेमाल किया गया है और इसमें हमें आउटपुट वोल्टेज जो कि डिजायर्ड टर्मिनल्स के अक्रॉस होगी उसको कैलकुलेट करना है. आइए इस सर्किट को एक नजर स्लाइड पर देखते हैं. नाउ दिस नेटवर्क इज यूजिंग a voltage dependent current source having a value of 2Vx divided by 1K. The value of this current source is dependent upon the voltage drop across the 2 kilo ohm resistance, which is marked as V sub X. Also, this circuit is using a 12 volt independent source. And we want to calculate the output voltage, which is marked as V naught across the output terminals. Now, we want to calculate this voltage using Thevenin's theorem. Before we start applying the Thevenin's theorem, let's first of all we decide about the load resistance. For this circuit, because we are going to calculate the output voltage V naught across the 2 kilo ohm resistance, therefore, that will be considered as our load resistance. As a matter of step 1 of the Thevenin's theorem, we have to replace this load resistance. Once we replace this 2 kilo ohm resistance, our modified circuit will be as shown in this slide. Now, we can see that the 2 kilo ohm resistance is in series to an open circuit. Therefore, no current will be flowing through the 2 kilo ohm resistance. Hence, apart from 2 kilo ohm resistance including itself, we can ignore the circuit. Therefore, our Thevenin voltage terminal will be shifting to the 2 kilo ohm resistance, which is marked by a voltage drop having a value Vx across it. Now, from the circuit we can also see that the same voltage Vx will be appearing at the node which is marked in the circuit as Vx, so that we can write the expression for Vx as Vx is equal to 12 plus V1, because we suppose that V1 is positive and the negative terminal of the battery having 12 volt value is connected to V1. For node 1, we can write the expression as V1 divided by 2K plus 2Vx divided by 1K, that is the value of the current source, plus Vx divided by 2K equals 0. Simplifying it, we can write V1 plus 4Vx plus Vx equals 0. Putting the value of V1, we can write Vx minus 12 plus 4Vx plus
Vx equals 0. Therefore, we can write 6Vx is equal to 12, and further simplifying it, we can calculate the value of Vx, that will be equal to 2 volts. Now, this will be our Thevenin voltage as well, because as mentioned earlier on in this example, that V Thevenin, which we are going to calculate, that is across the 2 kilo ohm resistance, and Vx is also across the same 2 kilo ohm resistance. Therefore, we can safely write Vx is equal to V Thevenin. Also, in order to calculate the Thevenin resistance and implement the third step into this circuit, what we need to do is, because a dependent current source has been used in this network, therefore, the open circuit will be converted into short circuit so that we can calculate the short circuit current flowing through the network. Hence, we can write Vx is equal to V1 plus 12. Also, we can write the equation as V1 divided by 2K plus 2Vx divided by 1K plus Vx divided by 2K plus Vx divided by 2K equals 0. Now, simplifying it, we can write Vx minus 12 plus 4Vx plus Vx plus Vx is equal to 0. Therefore, simplifying this expression, we can write 7Vx is equal to 12. Now, the short circuit current can be calculated as ISC is equal to 12 divided by 7 into 1 divided by 2. That will be equal to 6 divided by 7 milliamperes. Now, as we know the value of the short circuit current and the value of the Thevenin voltage, therefore, we are in a position to calculate the Thevenin resistance using Ohm's law. Therefore, we can write R Thevenin is equal to V Thevenin divided by I short circuit. Putting up the values for this VTH and ISC, we can calculate R Thevenin as R Thevenin is equal to 2 divided by 6 by 7 milli. That will be equal to 7 divided by 3K, or we can further calculate it as 2.33K. Now, as we have calculated all the unknown parameters for the Thevenin equivalent circuit, therefore, we can draw the Thevenin equivalent circuit as shown in this slide. The 2-volt battery is representing the Thevenin voltage. The 2.33 kilo ohm resistance is representing the Thevenin resistance, whereas the 2 kilo ohm resistance is the load resistance which we removed in the first step. Now, looking upon this circuit once again, we can see that this circuit is nothing more than a voltage divider network. And because we are interested to find out the value of V naught, and that V naught is to be calculated across the load resistance having a value of 2 kilo ohms, therefore, applying voltage divider rule to this network, we can write V naught
is equal to 2 into 2k divided by 2k plus 2.33k. And that will come up as 0.92 volts. अजीज तलबा, यहाँ तक तो हमने कोशिश की है कि थेवेनिन्स थ्योरम के जितने भी मुख्तलिफ जावियों से सर्किट्स हो सकें उनको कवर किया जाए। ताहम आप मजीद प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक में से कोई भी सर्किट उठाकर उसको थेवेनिन थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे। ये सर्किट्स आप जरूरी नहीं है कि किताब में थेवेनिन थ्योरम के टॉपिक के अंडर जो कुछ भी लिखा हो उनमें से उठाएं। आप कोई भी पीछे पढ़ी गई टेक्निक्स में से सर्किट उठाकर उस पर थेवेनिन्स थ्योरम का इतलाक कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजीद बढ़ा सकते हैं। अगला टॉपिक थेवेनिन्स थ्योरम से ही, जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया, रिलेटेड है। उसके एक पैरेलल ये थ्योरम है जिसको हम नॉर्टन्स थ्योरम के नाम से याद करते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम में, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं कि थेवेनिन्स थ्योरम में हम थेवेनिन्स वोल्टेज को कैलकुलेट करते थे, जबकि नॉर्टन्स थ्योरम में हम नॉर्टन करंट को कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से थेवेनिन्स थ्योरम में हम थेवेनिन वोल्टेज सोर्स के सीरीज में थेवेनिन रेजिस्टेंस को लगाते थे, जबकि नॉर्टन्स थ्योरम में जो भी नॉर्टन्स करंट की वैल्यू आएगी उसके इक्विवेलेंट एक करंट सोर्स बना दी जाएगी और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस जो भी कैलकुलेट होगी उसको हम उसके पैरेलल लगा देंगे। इसी तरह से बाकी के 4 स्टेप्स जो थेवेनिन थ्योरम में हम इस्तेमाल करते थे वो वही नॉर्टन्स थ्योरम में भी इस्तेमाल होंगे। थोड़ा सा करंट और वोल्टेज का डिफरेंस है। आइए इन चीजों को थोड़ा सा फॉर्मली स्लाइड पर देखते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम। वर्किंग विद नॉर्टन्स थ्योरम इज सेम एज वर्किंग विद थेवेनिन्स थ्योरम। We will follow the same 4 steps, but in second step, instead of finding VTH or Thevenin voltage, we will find I0 or Norton current by short circuiting the open terminals of the circuit. यानी कि जब हम थेवेनिन्स थ्योरम के इतलाक के वक्त ओपन सर्किट करते थे और फिर थेवेनिन वोल्टेज को कैलकुलेट करते थे, नॉर्टन्स थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम सर्किट को ओपन नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किट करेंगे और फिर नॉर्टन करंट को कैलकुलेट करेंगे। बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब तक कोई सर्किट ओपन हो उसमें से कोई किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं कर सकता। लिहाजा क्योंकि हमने करंट को कैलकुलेट करना है, इसलिए हमें सर्किट को शॉर्ट यानी कि एक वायर आउटपुट पर लगाना पड़ेगी ताकि हम उसमें से फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट कर सकें। आइए इसका मजीद 1-2 पॉइंट्स स्लाइड पर पढ़ते हैं। इन 4th step, our circuit will consist of a current source of value equal to I Norton and the Norton resistance will become parallel with RL. अगली मिसाल जो कि हम नॉर्टन थ्योरम से मुतल्लिक लेने जा रहे हैं, उसमें 2 सोर्सेस जो कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। मिसाल निहायत सादा है। आइए इसको स्लाइड पर देखते हैं। वी वांट टू कैलकुलेट द करंट V0 as mentioned in this circuit using Norton's theorem. As usual, we will follow the 4 steps as we have discussed just now. First of all, we will replace the load resistance with the short circuit so that we can find Norton current, or we have mentioned it as IN in this circuit. As we replace the load resistance with the short circuit, we have obtained 2 loops for this circuit. Therefore, we have to apply KVL
for each of these individual loops. And when we want to apply KVL to these loops, obviously we have to assign the currents which are unknown to each of these loops. Therefore, we assign the current I1 and I2 to these two loops. Now, we want to calculate, in fact, I Norton. Therefore, applying KVL for the loop 1, we can write 6K I1 plus 3K I1 minus I2, because this is being shared between the two loops, minus 12 minus 6 equals 0. Simplifying it, we can write 9K I1 minus 3K I2 equals 18. Applying KVL for loop 2, we can write 2K I2 plus 12 plus 3K I2 minus I1 equals 0. Simplifying it, we can write minus 3K I1 plus 5K I2 equals minus 12. Solving equations for loop number 1 and loop number 2 simultaneously, we can calculate the value of I2 as minus 1.5 milliamperes. Now, after calculating the value of I2, we can see that in the loop 2, there are no sub-branches in the circuit. Therefore, we can clearly see that the same current will be flowing as IN. Hence, we can equate I2 is equal to IN. Hence, IN will be equal to the same value as I2, having minus 1.5 milliamperes. इसके बाद जब हम स्टेप नंबर 3 पर जाएंगे तो बिल्कुल वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे जैसा कि हम थेवेनिन्स थ्योरम में अडॉप्ट करते आए हैं, यानी कि वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट सर्किट से और करंट सोर्सेस को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरीके से हम आर थेवेनिन को कैलकुलेट करते थे और इसी तरीके से हम आर नॉर्टन को कैलकुलेट करेंगे। आइए सर्किट पर देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करने के बाद सर्किट की क्या शक्ल बनती है। आइए स्लाइड पर चलते हैं। दिस स्लाइड शोज द रेजिस्टिव नेटवर्क लेफ्ट आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग द two independent voltage sources, and we want to calculate R Norton or R sub n. Therefore, from this circuit we can inspect that 3K is in parallel with 6K resistance, and if we replace this 6K and 3K with their equivalent value, then clearly we can see that the equivalent value will be in series to this. Therefore, we can write 6K parallel to 3K plus 2K, that will be equal to 6K into 3K divided by 6K plus 3K plus 2K. That will be equal to 2K plus 2K, hence it will be equal to 4K. Therefore, we can say that the value of Norton resistance is 4K. अब जबकि हमने नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, तो अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकें। आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं। Therefore, the current through RL can be calculated as, before we calculate the current through RL, we can see that the equivalent Norton circuit will be as shown in this slide. We have put the current source having a value of 1.5 milliamperes
and in parallel to that we have put the Norton resistance and brought back the load resistance which we earlier on replaced by a short circuit. Therefore, the current through RL will be equal to, using current division rule, minus 1.5 milli into 4K divided by 8K. That will be equal to minus 0.75 milliamperes. Hence, we are in a position to calculate the V naught. Therefore, applying Ohm's law, we can calculate the value of V naught as V naught equals minus 0.75 milli into 4K. That will be equal to minus 3 volts. अजीज तलबा, इससे अगली मिसाल में जो हम सर्किट एनालाइज करने जा रहे हैं उसमें एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हमें वी नॉट जो कि दिए गए आउटपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस होगी उसको कैलकुलेट करना है। सर्किट बिल्कुल उसी तरह से है, नॉर्टन थ्योरम्स को अप्लाई करना है। स्ट्रेटजी बिल्कुल वही जो अभी हमने पिछली एग्जांपल में सॉल्व की है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस मिसाल में हमारे पास दोनों इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज इस्तेमाल किए गए थे, जबकि इस मिसाल में एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का इस्तेमाल किया गया है। आइए इस सर्किट को स्लाइड पर देखते हैं। We want to calculate the voltage V naught using Norton's theorem. Therefore, as usual, we will follow the 4 steps. First of all, we replace the load resistance by a short circuit. Therefore, our circuit will adopt the shape as shown in this slide. We also mark that the current IN is flowing through the short circuit and assign various currents to the respective loops. Also, we have in this slide worked out the various nodes and assigned some unknown values of voltages to these nodes, V1 and V2. Clearly, looking onto the circuit, we can see that the short circuit current can be written as I1 plus I2. For node 1, we can write the equation as V1 divided by 4K plus V1 minus 2 divided by 3K plus V1 divided by 6K plus 4 milli equals 0. Further simplifying it, we can write 3V1 plus 4V1 minus 8 plus 2V1 plus 48 equals 0. If we further simplify this expression, we can get 9V1 plus 40 equals 0. Therefore, we end up with V1 is equal to 4.44 volts. For node 2, we can write the expression as V2 divided by 2K plus V2 divided by 8K minus 4 equals 0. Further simplifying it, we can write 4V2 plus V2 minus 32 equals 0. Or we can write 5V2 is equal to 32. Hence, V2 will be equal to 32 divided by 5. That will be equal to 6.4 volts. अब जबकि हमने V1 और V2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, लिहाजा हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि I1 और I2 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकें। आइए इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए एक मरतबा फिर स्लाइड पर चलते हैं।
Therefore, we can write for I1 as I1 is equal to V2 divided by 8K, putting the value of V2, which is 6.4 volts, in this expression. We can write 6.4 divided by 8K, and that will be equal to 0.8 milliamperes. Also, we can calculate the value of I2, writing the expression as I2 is equal to V1 divided by 4K. Now, the value of the V1 we have earlier on calculated as 4.44 volts. Therefore, I2 will be equal to 1.11 milliamperes. اب جبکہ ہم نے I1 اور I2 کی ویلیو کو بھی کیلکولیٹ کر لیا ہے، لہذا ہم نارٹن کرنٹ یعنی کہ I شارٹ سرکٹ کو بآسانی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں دونوں کرنٹس کو ایڈ اپ کرنا ہوگا. آئیے اس عمل کو بھی سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. Therefore, we can write I Norton is equal to I1 plus I2. That will be equal to 1.11 plus 0.8. That will be equal to 1.91 milliamperes. اب جبکہ ہم نے نارٹن کرنٹ کو بھی کیلکولیٹ کر لیا ہے تو اگلے سٹیپ کے طور پر ہم نارٹن ریزسٹنس کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. طریقہ کار وہی ہے جو ہم تھیوننس تھیورم میں اپلائی کرتے آئے ہیں، یعنی کہ وولٹیج سورسز کو شارٹ کریں گے اور کرنٹ سورسز کو اوپن کریں گے، اور اس طریقے سے ہم آر این یعنی نارٹن ریزسٹنس کو کیلکولیٹ کریں گے. دیے گئے سرکٹ میں سے سورسز کو ایلیمینیٹ کرنے کے بعد جو شکل ہمارے پاس نیٹ ورک کی بنتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. آئیے سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. From this network, we can see that we have eliminated the sources which were the current and the voltage sources, so that we are end up with this type of resistive network. In order to calculate the Norton resistance, we can see that 3K is parallel to 6K. And if we solve that, the resultant or the equivalent for these two parallel resistances will be equal to 2K. If we replace these two resistances by a single equivalent resistance having a value of 2K, then this 2K will become in series with 4K resistance. Hence, we can add them up so that the resultant is 6K. Now, also we can see that 8K is in series with 2K. Therefore, we can add them up. Hence, we get 10K resistance. After replacing these two resistances as well with their equivalent of 10K, we can clearly see that the two resistances which are equivalent in nature, having values of 10K and 6K, are parallel to each other. Hence, we can calculate the equivalent of these two resistances as well, writing 10 into 6 divided by 16. That will be equal to 60 divided by 16. That will be equal to 3.75 K. Now, we have completed all the three steps for the Norton's theorem. اب جبکہ ہم نے نارٹنس تھیورم کے 3 سٹیپس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، لہذا ہمارا اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ نارٹنس ایکویولنٹ سرکٹ کو ڈرا کیا جائے اور پھر اس میں سے ریکوائرڈ ویلیوز کو کرنٹ ڈویژن رول کا اطلاق کرتے ہوئے کیلکولیٹ کیا جائے. آئیے سب سے پہلے سلائیڈ پر سرکٹ کی بلڈنگ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کس طرح سے بلڈ اپ کیا جاتا ہے. We have calculated the Norton current, which was having a value of 1.91 milliamperes. Therefore, we replace the Norton current by a current source
having the same value. In parallel to this current source, we will put the Norton resistance, which is having a value of 3.75 kilo ohms. Also, in parallel to that, we will bring the load resistance which we earlier on removed, and that is having a value of 4 kilo ohms. Therefore, we can calculate the value of V naught, that is the output voltage across the given output terminals. Now, if we define that I naught is the current which is flowing through the RL having a value of 4 kilo ohms, then we can calculate I naught as I naught equals 1.91 milli into 3.75 K into 1 over 4K plus 3.75 K. That is the application of the current division rule. Therefore, I naught is equal to 0.92 milliamperes. After calculating I naught, we can easily calculate the value of V naught. Therefore, we can write V naught is equal to 4K into 0.92 milliamperes. That will be equal to 3.68 volts. अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने थेवेनिन्स थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे रेजिस्टिव नेटवर्क्स का एनालिसिस सीखा जिनमें डिपेंडेंट वोल्टेज या फिर डिपेंडेंट करंट सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया था। आपकी याद दहानी के लिए एक मरतबा फिर बताता चलूं कि जब डिपेंडेंट वोल्टेज या फिर डिपेंडेंट करंट सोर्स किसी भी सर्किट में इन्वॉल्व होगा तो उसकी स्ट्रेटजी एज कंपेयर टू इंडिपेंडेंट अप्रोच चेंज हो जाती है। यानी कि इंडिपेंडेंट में हम ऐसा करते थे कि आर थेवेनिन को कैलकुलेट करते हुए मुख्तलिफ सोर्सेस को रिप्लेस कर देते थे, जबकि अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया हो तो फिर हमें उन सोर्सेस को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती। ताहम उस ओपन सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट करके उसमें से करंट को कैलकुलेट करते हैं, और क्योंकि उससे पिछले स्टेप में हमने थेवेनिन वोल्टेज को कैलकुलेट कर लिया होता है, लिहाजा करंट जो कि शॉर्ट सर्किट की सूरत में हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है, उसका और थेवेनिन वोल्टेज का इस्तेमाल करते हुए हम आर थेवेनिन को कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू यानी कि वोल्टेज या फिर करंट जैसा भी मामला हो उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने नॉर्टन्स थ्योरम को पढ़ा। नॉर्टन्स थ्योरम में जैसा कि हमने इस लेक्चर में पहले बताया कि थेवेनिन थ्योरम से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। फर्क सिर्फ यही है कि थेवेनिन थ्योरम में हम वी थेवेनिन को कैलकुलेट करते थे, जबकि नॉर्टन्स थ्योरम में हम नॉर्टन करंट को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद दूसरा फर्क यह है कि फाइनल जब हम वैल्यूज को कैलकुलेट करने लगते हैं तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को जो हम बनाते थे उसमें थेवेनिन वोल्टेज और उसके सीरीज में थेवेनिन रेजिस्टेंस को लगाते हुए लोड रेजिस्टेंस को वापस लगा देते हैं, और वोल्टेज डिवीजन रूल का इतलाक करते हुए हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जबकि नॉर्टन्स थ्योरम में हम जो भी नॉर्टन करंट की वैल्यू निकलती है उसका इक्विवेलेंट यानी कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बनाते हैं, और नॉर्टन रेजिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट की होती है उसको इस करंट सोर्स के पैरेलल में इंसर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद लोड रेजिस्टेंस को वापस लाकर नॉर्टन रेजिस्टेंस के पैरेलल में इंसर्ट कर दिया जाता है।
اب جب کہ نارٹن تھیورم کا استعمال ہوتا ہے تو ہمارے پاس تمام معاملات ان ٹرمز آف کرنٹ اور ریزسٹنس رہ جاتے ہیں، لہذا ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس میں کرنٹ ڈویژن رول نہ کہ وولٹیج ڈویژن رول اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنی ڈیزائرڈ ویلیوز کو کیلکولیٹ کر پاتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں بھی ہم نارٹن تھیورم سے متعلق کچھ مزید کمپلیکیٹڈ سرکٹس جن میں ڈپینڈنٹ سورسز کا استعمال ہوگا ان کا انالیسس سیکھیں گے۔ آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔